Hello and welcome to CVR English. You're watching the news. I'm Idris and these are the top updates of this hour. On G20 summit in Delhi, Congress MP Manish Tiwari says, unfortunately this time both President Vladimir Putin and President Xi Jinping have officially opted out of the summit and they will be sending their representatives. It's also not clear at the point in time how many other heads of the state would be attending. So therefore, under those circumstances, the principal challenge to restore the equilibrium of the peace in the global order, which has been disrupted by the unnecessary war in Ukraine, where Russia bears responsibility, and the transgressions across the line of actual control, where China bears the responsibility, that principal objective is not going to be addressed at this forum. As a multilateral forum, it has its own relevance, but it needs to be really honed. It needs to really focus as to where it can make a difference, and given that the world has gone fractured and almost a new Cold War is upon us, and the principal antagonists have decided to absent themselves, what this G20 can really deliver is to see if we can articulate or if we can fashion some kind of cohesive response to meet the environmental challenges, the challenge of global warming, which is critical and existential to planet Earth. Originated as a meeting of the finance ministers of these 20 countries post the Asian financial crisis of 1999. It was upscaled to the heads of states level in the year 2008 after the global economic meltdown. The first summit at the heads of state or heads of government level was in Washington DC in the December of 2008. And since then the G20 has been meeting at the apex level. Unfortunately, this time both President Vladimir Putin and President Xi Jinping have officially opted out of the summit, and they would be sending their representatives. It is also not clear at this point in time how many other heads of states would be attending. So therefore, under those circumstances, the principal challenge to restore the equilibrium of peace in the global order, which has been disrupted by the unnecessary war in Ukraine, where Russia bears responsibility, and the transgressions across the line of actual control, qua India, where China bears the responsibility, that principal objective is not going to be addressed at this forum. Moreover, the economic challenges which were before the world in 2008 or later in 2011 with the Eurozone crisis are no longer of that intensity. The G20 singularly failed to fashion a cohesive global response to the once-in-a-century pandemic which ravaged through the world from the March of 2020 till the December of 2021. So therefore, I think it is time for the G20 to go back to the drawing board and really try and seriously introspect as to what is the constructive and positive role that it can play in making the world a better place for the 8 billion people who call planet Earth their home to live in. G20. Now moving ahead, during his address at the Jan Ashirwad Yatra, Union Minister of Road, Transport and Highways Nitin Gadkari says, earlier Madhya Pradesh was known as Bimaru state, but now it is known as developing state. Chief Minister Shivraj Singh Chauhan expanded the irrigation area to ensure work for every farmer and water in every field. By doing this, Madhya Pradesh has achieved the first position in agriculture production.
मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। एक समय मध्य प्रदेश की चर्चा बीमारू राज्य करके होती थी, आज वो मध्य प्रदेश एक विकसनशील राज्य करके उसकी चर्चा होती है। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यही बात को लेकर शिवराज जी ने सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया, कृषि विकास का दर बढ़ाया, कृषि उत्पादन बढ़ाया और देश में पहले नंबर का अव्वल स्थान प्राप्त किया है। एक समय मध्य प्रदेश की On the G20 summit, Delhi Minister Atashi says in the major areas of G20, major roads have been reconstructed. The tunnel around the ITBO is funded by the central government, but the entire tunnel complex, the integrated transit corridor, is constructed by the PWD. It provides a link from Purana Killa to Ring Road. It provides security through which the G20 delegates can enter the ITPO complex. It would be useful in the future too. Fountains have been installed in 30 places. More than 80 to 90 statues have been installed. More than 1.5 lakh plants are planted. Apart from this, the MCD has facelifted the major markets in GK2, Mehrauli, etc. Now we can say that Delhi is ready to welcome G20 delegates. There would be minor inconvenience for the citizens due to the restrictions, but I insist to everyone that G20 is a huge opportunity for our country. बड़ी बड़ी सड़कों को फिर से बनाया गया है। जो आप देख रहे हैं, जो पूरा टनल है आईटीपीओ के आसपास, वो केंद्र सरकार ने फंड किया है, लेकिन वो पूरा टनल्स का कॉम्प्लेक्स जो एक इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर है वो पीडब्ल्यूडी ने बनाया है। वो पुराने किले से रिंग रोड तक पूरा एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसके तहत G20 डेलीगेट्स सीधा आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आने वाले समय में भी दिल्ली वालों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उसके अलावा तकरीबन 30 जगह पे फाउंटेन्स लगाए हुए हैं, 80-90 से ज्यादा स्टैचूज लगाए गए हैं पूरी दिल्ली में। 1.5 लाख से ज्यादा पौधे, चाहे वो मिट्टी में हो चाहे वो गमलों में हो, उनको लगाया गया है। और ये तो काम दिल्ली सरकार ने किया है। इसके अलावा एमसीडी ने, चाहे पुरानी दिल्ली में गालिब की हवेली का, हरदयाल लाइब्रेरी का फेसलिफ्ट हो, चाहे जो मेजर मार्केट्स हैं जैसे GK2, PVR, मेहरौली, इन सब एरियाज में फेसलिफ्टिंग हुई है, डेकोरेशन हुई है, ब्रांडिंग हुई है। और अब अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में चाहे पीडब्ल्यूडी ने काम किया हो, चाहे एमसीडी ने काम किया हो, अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली G20 के डेलीगेट्स को रिसीव करने के लिए तैयार है। देखिए, जो डेलीगेट्स हैं उनके तो बहुत, क्योंकि सिक्योरिटी कंसिडरेशंस भी होते हैं, तो उनके प्लान्स और उनकी आइटिनरीज पहले से बनी हुई हैं कि वो कहाँ जाएंगे, कौन सा एरिया देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो तो ऑलरेडी उनके प्लान्स बने हुए हैं। एंड ये बात आपकी सही है कि रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, उससे थोड़ा सा दिल्ली वाले भी थोड़ा परेशान होंगे, पर मेरा सभी से आग्रह है कि G20 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये बात सही है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ परेशानियां भी हैं, लेकिन 3 दिन की बात है। अगर भारत की एक शानदार इमेज पूरी दुनिया में जाती है तो मुझे लगता है हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। G20 के मेजर एरियाज में बड़ी बड़ी सड़कों को During the joint press conference on increasing cases of dengue, Minister Saurabh Bhardwaj says for dengue we have marked beds separately. These numbers are available on the public portals. As soon as G20 ends, we will do a campaign called 10 weeks, 10 minutes at 10, so that the people will become aware not to store water and also to stop breathing. For G20, we have marked beds, emergency space and ICUs. We have made all arrangements keeping in mind any emergency. डेंगू के लिए
हर हॉस्पिटल के अंदर अलग से बेड्स हमने चिन्हित किए हैं और ये आंकड़े एमसीडी को देने चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि वो आंकड़े जो हैं वो पब्लिश करें। वैसे ये पब्लिक पोर्टल्स के अंदर ये आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जैसे ही G20 पूरा होगा हम लोग डेंगू की बड़ी कैंपेन भी दिल्ली के अंदर लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन करेंगे ताकि लोग भी जो है डेंगू के लेके और सजग हों और अपने यहाँ जो है इस तरह से पानी इकट्ठा ना होना दें और ब्लीडिंग को रोका जा सके। कल आपने एक मीटिंग की थी जो G20 की ड्यूटी में डॉक्टर करने वाले हैं, उसकी क्या कुछ रूपरेखा है? क्या हॉस्पिटल्स में ही व्यवस्था होगी या अलग अलग होटल्स में जिसमें डेलीगेट्स रुकेंगे वहाँ भी भेज देंगे? देखिए, G20 के लिए जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी वो सारी मदद जो है हमने उनको दी है। दिल्ली सरकार के 5 अस्पताल G20 के लिए, उसके अंदर हमने बेड्स ईयरमार्क किए हैं, इमरजेंसी स्पेस ईयरमार्क किया है, आईसीयू बेड्स ईयरमार्क किए हैं। दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स उन होटल्स में जहां पे ये विदेशी मेहमान रहेंगे 24/7 हमारी डॉक्टर्स की टीम वहां पे उपलब्ध रहेगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंसेज और उसके अंदर हमारे सीनियर रेजिडेंट अवेलेबल रहेंगे। सब कारकेड्स के साथ हमारी एम्बुलेंसेज विद सीनियर रेजिडेंट्स अवेलेबल रहेगी। किसी भी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतजाम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किए हैं। काफी मरीज आ रहे हैं। डेंगू के लिए हर हॉस्पिटल के अंदर अलग से बेड्स हमने चिन्हित किए हैं और ये आंकड़े एमसीडी को देने चाहिए। हम उनसे बात करेंगे कि वो आंकड़े जो हैं वो पब्लिश करें। वैसे ये पब्लिक पोर्टल्स के अंदर ये आंकड़े उपलब्ध रहते हैं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। जैसे ही G20 पूरा होगा हम लोग डेंगू की बड़ी कैंपेन भी दिल्ली के अंदर लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन करेंगे ताकि लोग भी जो है डेंगू के लेके और सजग हों और अपने यहाँ जो है इस तरह से पानी इकट्ठा ना होना दें और ब्लीडिंग को रोका जा सके। कल आपने एक मीटिंग की थी जो G20 की ड्यूटी में डॉक्टर करने वाले हैं, उसकी क्या कुछ रूपरेखा है? क्या हॉस्पिटल्स में ही व्यवस्था होगी या अलग अलग होटल्स में जिसमें डेलीगेट्स रुकेंगे वहाँ भी भेज देंगे? देखिए, G20 के लिए जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से मदद मांगी थी वो सारी मदद जो है हमने उनको दी है। दिल्ली सरकार के 5 अस्पताल G20 के लिए, उसके अंदर हमने बेड्स ईयरमार्क किए हैं, इमरजेंसी स्पेस ईयरमार्क किया है, आईसीयू बेड्स ईयरमार्क किए हैं। दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स उन होटल्स में जहां पे ये विदेशी मेहमान रहेंगे 24/7 हमारी डॉक्टर्स की टीम वहां पे उपलब्ध रहेगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली एम्बुलेंसेज और उसके अंदर हमारे सीनियर रेजिडेंट अवेलेबल रहेंगे। सब कारकेड्स के साथ हमारी एम्बुलेंसेज विद सीनियर रेजिडेंट्स अवेलेबल रहेगी। किसी भी इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंतजाम On Priyank Kharge, BJP National General Secretary C.T. Ravi says Sanatana Dharma doesn't discriminate. The Sanatana Dharma's principle says that the world is a family, not with just humans. All living beings are a part of it. If Priyank Kharge wants to remove casteism, we will support him. But if he wants to remove religion, then we will oppose it. Religion and casteism are different. I will want to tell Priyank Kharge that if you are against casteism, then you denounce casteism. सनातन धर्म डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेट करना वो धर्म नहीं है। डिस्क्रिमिनेट करना अधर्म होता है। सनातन धर्म का मौल्य है विश्व एक कुटुंब है, वो सनातन धर्म का मौल्य है। सबको भगवान के रूप में देखना सनातन धर्म का मौल्य है। केवल मनुष्य मात्र के लिए ऐसा नहीं कहा, प्राणी पक्षी जड़ और चेतन के साथ में भी ऐसा व्यवहार किया अपना पूर्वजों ने, उसको सनातन धर्म कहता है। ये जातिवाद सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। क्या निकालना चाहता है?
जातिवाद निकालना चाहता है तो हमको सपोर्ट, हमारा सपोर्ट भी है उसको, उनको। धर्म निकालना चाहता है तो उसके खिलाफ हम हैं। धर्म के तरफ से हम लड़ेंगे। धर्म अलग है, जातिवाद अलग है, मत संप्रदाय अलग है। संप्रदायवादी बुरा हो सकता है, धर्मनिष्ठा बुरा नहीं होता है। हाँ, आज का दिन मत और धर्म को एक ही तरफ से देख रहा है, उसके वजह से गलती हो रहा है। रिलीजन अलग है, धर्म अलग है। बहुत चर्चा करने का विषय है। प्रियंक खरगे को एक बात बोलना चाहता हूं। खरगे जी, आप जातिवाद के खिलाफ है तो पहले आप जाति छोड़ करके जातिवाद के खिलाफ लड़ना होता है। आप जाति का पोर्ट के अंदर छुपा के जातिवाद के खिलाफ लड़ नहीं सकता। दूसरा, धर्म अलग है, मत संप्रदाय अलग है। मत संप्रदाय में बुरा है, इसके लिए उसके खिलाफ आज से नहीं, हजारों साल से अपना पूर्वजों ने सही करने के लिए उसको खिलाफ संघर्ष किया गया है। विवेकानंद जी भी ऐसा कहा है। अब सब लोग देख लो वेद, ऐसा विवेकानंद जी ने कहा। वेद में जातिवाद नहीं है, वेद में छुआछूत नहीं है। एक जमाना में ऋषि मुनियों में अलग अलग वर्ण का ऋषि मुनियों थे। दूर्वास ब्राह्मण नहीं था, विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं था, वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं था, वेदव्यास ब्राह्मण नहीं था। गुण के वजह से कृष्ण ने क्या कहा? चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्मा विभागशः नॉट बर्थ। गुण कर्म मीन्स क्वालिटी के वजह से। आज भी वर्गीकरण है। आईएएस आईपीएस लोगों के जैसे क्लास 4 को देखता है क्या? नहीं देखता है। आज का दिन भी वर्गीकरण है। सनातन धर्म डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। डिस्क्रिमिनेट करना वो धर्म नहीं है। डिस्क्रिमिनेट करना अधर्म होता है। सनातन धर्म का मौल्य है विश्व एक कुटुंब है। वो सनातन धर्म का मौल्य है। सबको भगवान के रूप में देखना सनातन धर्म का मौल्य है। केवल मनुष्य मात्र के लिए ऐसा नहीं कहा। प्राणी, पक्षी, जड़ और चेतन के साथ में भी ऐसा व्यवहार किया अपना पूर्वजों ने। उसको सनातन धर्म कहता है। ये जातिवाद सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। क्या निकालना चाहता है? जातिवाद निकालना चाहता है तो हमको सपोर्ट, हमारा सपोर्ट भी है उसको, उनको। धर्म निकालना चाहता है तो उसके खिलाफ हम हैं। धर्म के The global fintech sector currently generates about $245 billion of annual revenue, which is merely 2% of the global financial services revenue. It is estimated to reach $1.5 trillion in annual revenue by 2030. The Indian fintech industry is projected to generate around $200 billion in revenue by 2030. This projection indicates that by 2030, India's fintech sector could potentially contribute to approximately 13% of the global fintech industry's total revenue. These projections underscore the increasing significance of Indian fintech sector, says RBI Governor Shashikant Dasa in his address at Global Fintech Festival 2023. Sector which currently generates about $245 billion US dollars of annual revenue, which is merely a 2% of the global financial services revenue.
It is estimated to reach $1.5 trillion annual revenue by 2030. The Indian fintech industry is projected to generate around $200 billion in revenue by the year 2030. This projection indicates that by 2030, India's fintech sector could potentially contribute to approximately 13% of global fintech industry's total revenue. These projections underscore the increasing significance of the Indian fintech sector. The global fintech sector, which currently generates about $245 billion US dollars of annual revenue, which is merely a 2% of the global financial services revenue. It is estimated to reach $1.5 trillion annual revenue by 2030. The Indian fintech industry is projected to generate around $200 billion in revenue by the year 2030. This projection indicates that by 2030, India's fintech sector could potentially contribute to approximately 13% of global fintech industry's total revenue. These projections underscore the increasing significance of the Indian. On Netaji Subhash Chandra resignation from the BJP, Netaji Subhash Chandra Bose's nephew Chandra Kumar Bose says, in 2016, I had contributed to the BJP. I was inspired by the leadership of Narendra Modi. My principles are in line with my grandfather, Sarat Chandra Bose, and his younger brother, Netaji Subhash Chandra Bose. Their principles were that they saw every religion as Indian. They fought against the politics of division and communalism. I gave many proposals to the state and central leadership in BJP regarding the Bengal strategy, but they never implemented my proposals, even when they thought it was useful. When none of the proposals were accepted, then it doesn't make sense to be with this party. I'm not able to work, so I thought being with this party was a negative action. I clarified it to JP Nadda. My good wishes are with the party, but they should unite all communities. मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरत चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व को भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है। मगर मेरा जो प्रपोजल है, माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श, मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे, तो इस पार्टी के साथ रहना I thought was a negative action. तो इसीलिए I of course. Nigerian Foreign Minister Yusuf Maitama Togo says, it's wonderful, we look forward to it, we look forward to future collaboration, closer collaboration. We have always collaborated with India. Nigeria is on the table and want to be a part of decision-making process globally. Wonderful. We look forward to it. We look forward to
much collaboration, closer collaboration. We've always collaborated with India, going back to the non-aligned movement, struggles for independence, for liberation of closer ties, and of course lots of opportunities for business. And G20, we look forward to joining in good time. And Nigeria is on the table, wants to be part of the decision-making process globally. So how do you spend your presidency of India? On the Russian President Putin and Chinese President Xi Jinping not attending the G20 in Delhi, Chief Coordinator Harshvardhan Shringla says, I think we have a very good representation of both the heads of the state and government and heads of the international organizations in our New Delhi G20 summit. I think, as I said, the deliberations would be very productive and constructive, and I have no doubt that every country, every partner country in the G20 and every invitee country is with us in our endeavor to host a successful outcome-oriented, decisive, inclusive G20 summit. From 8th onwards, you will have a very large number of leaders who are from countries that are members of G20, but also our invitee countries and international organizations who would come to Delhi, and the 9th when you will have the beginning of this summit. The summit would have 3 broad sessions and a lot of activities would be at the Bharata Mandapam itself. It concludes in the afternoon of the 10th of September, and it is an event where leaders have an opportunity to discuss, confabulate and decide on matters of global importance. So from that perspective, I think it's a very important getting together of the most influential leaders of the world. And I think we are privileged to be the host of this unprecedented event. And I have no doubt that every country, every partner country in the G20 and every invitee country is with us in our endeavor to host a successful outcome-oriented. That was our today's bulletin. For more news and updates, keep watching CVR English.